just try and to be a little bit louder so it looks. So you got it पर कर देना. ऊपर. I'll move from here. ठीक है screen. तुम तो करो. हेलो फ्रेंड्स, ऑफलाइन फ्रेंड्स और हमारे ऑनलाइन फ्रेंड्स, वर्ड पावर ग्रुप के इस सेशन पे आप सभी का स्वागत है। हम सभी के अंदर बहुत सारे शब्द होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं जिन्हें हम अपने अंदर रखते हैं, तो वह विचारों के जंगल की तरह होता है जिन्हें हम देखते हैं, हमें अच्छा लगता है, पर जब तक कोई माली उसे बगीचे में नहीं कन्वर्ट करे, एक खूबसूरत गार्डन नहीं बने, तो आंखों को सुकून नहीं देता है। तो एक लेखक वही करता है, उन विचारों को बांध के एक सजे हुए बगीचे की तरह एक कहानी में, लेख में या कविताओं में पिरो के हमारे सामने लाता है। अब हम यहाँ से दुबई जाते मिराकल गार्डन देखते हो, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही सुंदर है, पर शुरुआत में हम उतनी सुंदर रचना नहीं कर सकते हैं। पर आज हमारे दो लेखक हमारे साथ हैं जो हमें छोटी छोटी बातें बता के हमें एक छोटी सी कहानी बता देंगे, ताकि छोटा सा सेशन गार्डन तो हम बना ही सकते हैं इस सेशन के अंत में, इसकी हम आशा करते हैं। तो आइए इनके साथ शुरुआत करते हैं और इस मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए मैं रश्मि चमड़िया को बुलाना चाहूंगी। थैंक यू। So very good afternoon everyone. Good afternoon. Yes, those who are present here and those who have joined us online. So for the creative writing workshop. So why do you think that creative writing is important? Anyone? Yes, definitely. Voice is audio is not good. Voice is cracking. Kindly be closer to the mic. Always we are trying to do so. Okay, so creative writing skills is needed to express ourselves better, to be in our own world of creation and to connect with people. So fortunately we have. Actually, one second. You can ask if it's audible better. So Sorry, echo karega. yeah. Voice. Okay. So fortunately we have two workshops today. So the first one will be moderated by our very own cafe member Neeta Pajoria. So we'll be talking about the art of writing short stories. So as we know, stories has always been an integral part in our lives. Right from the time we were children, we loved to listen to stories, bedtime stories, and then we used to imagine in our heads the stories being made. And then around the bonfire, we used to sit and talk to each other, telling stories to each other. And then as we grew up, we started to write them down. But then we had this problem, struggling with a plethora of ideas coming up in our mind. But then we could not put it in the right structure on paper. So here we have Neeta ji who would help us in guiding us, in framing our thoughts so that we can write a better story for us. And that will be followed by a small break where we can network over tea and snacks. And after that, there will be another workshop which will be moderated by, which will be conducted by
our another cabinet member, Anupriya Chaudhary. She'll be talking about, hi, please come. So she'll be talking about the content, how to create a content for brand stories. Okay. So with this, first I would like to extend our gratitude to Kavita ji for providing us the opportunity to conduct this workshop and for providing us this beautiful access, which is having a perfect view to make our imaginations go wide. Yes, so Kavita, can you please share a few words and felicitate our guests? वर्ड्स तो मेरे पैर नहीं किया आज वर्ड्स का ही सेशन है so we are all waiting to hear the words from Neeta and Anupriya. We are already late, so I will not take any more time, but thanking both of you for taking out time for all of us and also for them, and we hope to learn a lot today in both the workshops, so thank you. Have them there. Somebody can take a picture. It's not please do that. देखिए पायल मेरी जान ले ले कोई बात नहीं सबको मिलते हैं Thank you. So, is the voice issue only with Namrata or with everyone? किसी को नहीं समझ में आ रहा है? With everyone, not clear. No, there is a problem in Not clear. audio. Kavita, we can make out what the speaker is saying, but there is a crackling sound along with it. Where when they are also speaking. If we are loud, I guess everybody is able to hear. So what I could do is just a second. Now is it audible? Yes. Perfectly audible. Yes. Okay. हम यहाँ से सुनेंगे स्पॉटलाइट तुम्हारा स्पीकर को कैमरा अच्छा वो है वो कैमरा यहाँ पे नहीं so now we don't yes so gallery view उसमें खाली टाइप कर हमारा now is it audible? Yes It is. Yes, it is. हम यहाँ से सुनेंगे स्पॉटलाइट तुम्हारा स्पीकर खाली उसमें कैमरा अच्छा वो है कैमरा नहीं so now we don't yes so gallery view उसमें खाली टाइप कर हमारा now is it audible? Yes, it is. Your voice is audible. Now it depends. जब speaker बोले तब कैसा रहे. कविता मान लिख दो खाली चैट में कि क्वेश्चन सारे ड्रॉप कर देंगे चैट बॉक्स में लास्ट में शेड्यूल and one more thing, if you take लंबा break of tea and coffee, then जो offline वाले लोग हैं online वाले लोग हैं वो disturb हो जाएंगे. Don't worry on that. Let's start. Cross the bridge as it comes. Yes. So a small introduction about Neeta ji. So Neeta Bajoria is a wonderful writer on her way to pursue her childhood passion of writing. She wishes to touch the hearts of as many people through her musings.
Urban Chronicles 1 and 2, The Casket and Pesky, and Myra and the Secret Library are a few of her creative accomplishments. So let's learn the art of story writing and weave some beautiful stories out of our life incidents. So over to you, Neeta. मेरे को लग रहा है इंटरनेट का इशू है. Thank you, Cafe, and thank you, Kavita. I think the screen is frozen. Yeah, but still, I think from this small, this another screen, I think they can see. Yeah. No, we have switched it on, so they can see me. So, friends, I will start the presentation. I'll take the help of the presentation to go through it. And as she was telling, I would request everyone to write your questions in your notebook. And like after the presentation, then we can start the, they can write and you can write in the notebook. And then we can discuss the question answer. Okay, so let me share the screen. Are you all able to see the, but this is not how I wanted to come. Yes. Wait. This is the presenter's view, Neeta actually, which jo ho gaya, I think. Okay. What do I do? Yeah, end it now and then just start the slideshow, I think. Yeah, I think this is fine. Yeah. Okay? Yeah, this is fine. Yes. Okay. What are we doing here? Shall I continue? Yeah, you can. Okay. So, Yeah, all yours. all yours? Okay. Yes. That's good. So, we are going to, I'm just trying to tell you all how I have learned writing through my journey. It's not that I had any formal education at that time when I started writing, though now I'm MFA. And but still, even if you had an education about writing, it's not all. You know, when you write, you keep getting experiences, and that's how you learn all the things which you should not do or you should do. So let me start the session with a saying by Kahlil Gibran. You give but little. This is something which my teacher had told me. You give but little when you give of your possession. It is when you give of yourself that you truly give. So this is exactly what writing is all about. Writing is all about expressing your inner thoughts, right? It might be a short story, it might be a novel, it might be an essay, as she was telling, it might be a memoir, anything. But you have to write from your own experiences. Many people ask me that how do you get the imagination for your writing? I always tell them, writing can never be 100% imagination. Even for a fantasy writer like J.K. Rowling, who might have written a fantasy story, there might be a fantasy world, but all the ethos and all the things, the feelings inside it were coming from what we have seen in our life and what we feel is right and what we feel is wrong. So it all started from there only in my life also. When I was, I can call myself an opinionated woman. In certain subjects, I hold my opinion very strongly. And that is what I used to do. But then I used to listen that lecture nahi chahiye. Kisi ko lecture pasand nahi hai. Aap apni baat batate ho. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, but मुझे अपनी बात बोलनी थी. और then I realized I'll be mixing Hindi and English. I think that's no problem. So I realized that stories सबको पसंद है. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी बातें stories के through बोलूं तो सबसे अच्छा रहेगा. So yesterday a friend of mine asked me that because graphic novel is a set of 3 stories, but you know when they say graphic novel, किसी को नहीं समझ में आता है कि ये story short story है. So उसने मुझसे पूछा कि you have never written a short story and you are doing a workshop on short story. But then I would like to say I started my career writing short stories which came on magazines. So I'll tell you about that when we are talking about the publishing. So it's really very much coincidental that I'm talking about short stories. So let's go through the process of writing of short stories. As somebody was telling me that I always have so many thoughts.
but I don't know how to place them, how to उसको माला में कैसे ढंग से पिरोए कि एक के बाद एक क्या होना चाहिए. Writing is of course about expressing your thoughts, but there's a lot of homework and there's a lot of structuring that goes into it. Okay, so this is a preview of how the story process goes through. First is jotting the idea plot, then deciding the genre. We are not able to see the Yeah, slide I know. now. So I'm speaking, Yes. I'm speaking everything. So first is jotting the plot. Of course, I'll explain it again, but I'm just telling you the first time. Then deciding the genre, then finalizing your characters. We're talking about characters, characterization. Then comes the setting, then comes the voice, and then comes the first draft. So first draft के पहले भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको करनी पड़ती है, और उसके बाद आती है editing, and then we go to the publisher. But I'll come and I'll touch each of the points slowly. So what is a plot basically? What do you think is a plot? Can anyone tell me? Okay, it's there already on screen. Yeah, so no, plot is the story. It's a story, and it's a culmination of three things: idea, imagination, and feelings. Now, what is idea? आपको अपनी बात कहनी है, आप कई तरीके से अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन क्या कहनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हम किसी स्टोरी को भी अगर लिखते हैं तो कोई वो स्टोरी अलग है, लेकिन कोई एक बात है वो स्टोरी के थ्रू कहना चाहते हैं. एक ही स्टोरी से थोड़ी इधर उधर करके चार लोग चार तरह की बात समझाने की कोशिश कर सकते हैं. सो वो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि आइडिया, हम व्हाट डू वी वांट टू से, व्हाट इज माय आइडिया, व्हाट डू यू वांट टू से. देन कम्स इमेजिनेशन. नाउ आइडिया के वक्त में इमेजिनेशन से ज्यादा हम क्या अपने चारों ओर देखते हैं वो होता है. आइडिया ऐसे नहीं आती. आइडिया हम लोगों को भी कैसे आती है, ऑथर्स को, हम चलते फिरते हमको आइडिया आ जाती है. अच्छा, ये मुझे लग रहा है कि ये मुझे बताना है लोगों को, ये सही नहीं है, ये सही है, या एनीथिंग. दिस इज अ स्टोरी व्हिच आई वांट टू टेल, एंड देन यू हैव टू ऐड सम इमेजिनेशन. बिकॉज अगर हम न्यूज रिपोर्टर तो है नहीं कि हमने जो न्यूज देखा हमने उसको सीधा सीधा लिख दिया. दैट इज नॉट अ स्टोरी, दैट इज अ न्यूज स्टोरी. बट देन यू विल हैव टू ऐड सम इमेजिनेशन टू इट सो दैट इट बिकम्स ब्यूटीफुल. जैसे उसने बोला मिराकल गार्डन में तो फ्लावर्स जस्ट ऐसे कि लाइक दे हैव नॉट जस्ट पुट द फ्लावर्स लाइक दैट. They have created some stories, they have made it beautiful, and for that they needed imagination. And last but not the least is feelings. This is very, very important, because without feelings, ये एकदम basic हो जाएगी. Like you can imagine two actors, right? One actor, same dialogue, same line. दो actor अगर बोल रहे हैं, एक अगर feeling के साथ कहता है तो वो बनता है सुपरस्टार, और अगर दूसरा अगर just ऐसे बोलने के लिए बोल देता है तो फिर वो we all know what happens to them. So a plot is these three things. Okay. Now, let's see. Genre of a story. So after you know what you want to say, you have to decide how you're going to present. There are many genres. एक ही बात आप science fiction, horror, mystery, fantasy, realistic, sports, कई तरीके से पेश कर सकते हो. ऑफ कोर्स आपके आइडिया पे भी डिपेंड करता है. अगर स्पोर्ट्स रिलेटेड है तो इट बिकम्स अ स्पोर्ट्स फिक्शन, अगर कुछ साइफाई है तो इट्स अ साइंस फिक्शन. हॉरर, मिस्ट्री एक ऐसी चीज है जो कई बार किसी बात को बोलने का एक नॉर्मल, किसी बात को एक आप नॉर्मल स्टोरी में भी पेश कर सकते हैं, आप मिस्ट्री की तरह भी पेश कर सकते हैं. नाउ इट ऑल डिपेंड्स व्हाट यू आर कंफर्टेबल विद. हम किस जॉनर को पढ़ते हैं इससे भी हमको बहुत समझ में आता है कि हम किस जॉनर में शायद अच्छा लिख पाए. मस्ट नहीं है, फिर भी कई बार हम लोगों को वो जॉनर बहुत पसंद है और लिखने टाइम हम लोगों की हालत बहुत खराब हो सकती है. बट स्टिल हमको इतना समझ में आता है कि वो जॉनर हमको अच्छा लग रहा है, तो शायद हम उस जॉनर से स्टोरी को बताएं. मर्डर मिस्ट्रीज या हॉरर या ये सारी बातें भी जनरली आपको कोई एक बात बताने के लिए ही पेश करते हैं, राइट? सो यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या जॉनर लेना है. शॉर्ट फिक्शन जैसे जो शॉर्ट स्टोरीज है, आप एक बड़े नॉवल के बारे में भी सोच सकते हैं, ग्राफिक नॉवल सोच सकते हैं जैसे मैंने शॉर्ट स्टोरी को कन्वर्ट करने की सोची. आप एक स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं जिसके ऊपर फिर आप सीरीज या वेब सीरीज वगैरह बनती है. दैट इज अ डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग, दो इट्स ऑल्सो अ प्लॉट, यू नीड अ प्लॉट एंड एवरीथिंग, बट उसको लिखने की भी तरीका अलग हो सकता है. तो इसके बाद हम लोगों को स्टोरी का जॉनर फाइंड आउट करना बहुत जरूरी हो जाता है. देन कम्स टाइप ऑफ नैरेटर. नाउ नैरेटर मतलब हुआ
मैंने चारों इसलिए खोल दिया कि कौन बोल रहा है स्टोरी। हम 2-3 तरीके से स्टोरी पेश कर सकते हैं। फर्स्ट पर्सन, इसमें आई करके है, इट्स लाइक एन ऑटोबायोग्राफी, नॉट नीडेड कि ऑटोबायोग्राफी ही हो, बट वो लगेगा ऑटोबायोग्राफी जैसे, जहां पर मैं ही बोल रहा हूँ सारी कहानी। सेकेंड पर्सन इज व्हेन यू आर टॉकिंग लाइक अ you have done this. There's a very good series now coming on Netflix also called You. That's a very word of the name of the, it's a YOU. It's a psychological thriller, but it's like the narrator speaking, you are like this, अपनी heroine से वो बात कर रहा है constantly, you are doing this, you are going there, you are doing this, that. So that's the second person. Then it is the third person. ये second person बहुत ज़्यादा कम use होता है because it's little difficult to do. But first person बहुत use होता है. Limited third person, this also is used a lot where the narrator says whatever is seen. उसमें कोई emotion नहीं आता है. I've seen Sharat Chandra Chattopadhyay use this limited third when he's just showing whatever is there. ये हो रहा है, ये घट रहा है, ये घट रहा है, घट. Of course, there is lot of emotions, but वैसे लगेगा नहीं कि उसने कुछ emotion डाला. ये लगेगा कि हाँ उसने जो देखा. सूत्रधार. And then there is omniscient. हम जनरली थर्ड सबसे ज्यादा यूज करा जाता है फिक्शन में, भी यूज मोस्टली थर्ड पर्सन. देन ओमनीसिएंट, जो सब कुछ जानता है. ये ओमनीसिएंट भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम लोग, और वो सब कुछ जानता है कि वो पर्सन क्या सोच रहा है. थर्ड और फोर्थ में ये फर्क है कि थर्ड वाला सिर्फ बताता है वो क्या देख रहा है, वो ये नहीं बता सकता कि फलाना कैरेक्टर या कोई भी कैरेक्टर क्या सोच रहा है. वो यही बताता है कि वो क्या कर रहा है. इट्स ऑल व्हाट इज हैपनिंग. बट ओमनीसिएंट में वो ये भी बता देता है कि वो कैरेक्टर क्या सोच रहा है या वो कैरेक्टर क्या सोच रहा है, एनालाइज करके बता सकता है. बट थर्ड में वो नहीं बता सकता, वो उसकी हरकतें को बता सकता है. सो ये फोर्थ और फर्स्ट सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं. फर्स्ट में बहुत मजा आता है कभी कभी, लाइक मैंने भी कुछ जगह पे यूज किया है. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एलिमेंट्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन. नॉर्मली जब हम स्टोरी शुरू करते हैं ये बहुत इग्नोर्ड होता है. हमको पता है मेरे क्या कैरेक्टर्स हैं और हम लिखने बैठ जाते हैं और हम लिखने जाते हैं और लिख भी डालते हैं, मगर शायद हम लोग को बहुत डिटेल में पता नहीं होता कि वो कैरेक्टर्स क्या है. और कई बार क्या होता है, यही फर्क करा देता है एक बिटवीन अ वेरी सक्सेसफुल स्टोरी एंड नॉट. यू मस्ट नो योर कैरेक्टर्स इनसाइड आउट, अदरवाइज आपकी वो रियलिस्टिक नहीं लगेगी. एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यू माइट से समथिंग अबाउट द कैरेक्टर विच प्रीवियसली कुछ और था और लगा नहीं ये कैरेक्टर में, क्योंकि रीडर जो पढ़ रहा है वो अलग तरीके से पढ़ रहा है. इसका मतलब जब हम कोई भी कैरेक्टर बिल्डअप करते हैं किसी स्टोरी में, तो उसकी अपीयरेंस से लेके सब कुछ माइन्यूट चीजों को मैंने जैसे यहाँ पर डिटेल किया है, उसकी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, एनवायरमेंटल एंड स्पिरिचुअल, ये सारा चीज हमको पता होना चाहिए, स्पेशली फॉर द 2 or 3 मेन कैरेक्टर्स. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे छोटे बड़े कैरेक्टर्स को इतना करने की जरूरत है, मगर 1 या 2 तो हमारे मेन कैरेक्टर्स होते हैं जिनको आपस में इंटरैक्ट करना हो. So because a short story is also like anything between 5,000 to 15,000 also it might go. So words. Characterization words, yeah. So characterization is very important. So see physical में like age, appearance, we must know. ये बहुत simple है. You will just have to write कि dash कर करके आपको लिख देना है. मगर एक बार once you have done this chart and you know, you will feel how much you know that. Now I'll tell you a very small secret about how we do. This is very difficult to do because sometimes you do not know how they should go. उसका emotional कैसा होना चाहिए, mental कैसा होना चाहिए. मैं ये चीज यूज करती हूँ that whoever people I see around me, मैं उनको एक assign कर देती हूँ. ये कैरेक्टर उसकी तरह है, मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है तब ये समझना अच्छा उसका मेंटल माइंड क्या है, उसका एनवायरनमेंट क्या है, उसकी सोशल रिलेशनशिप क्या है. I think many authors do this. So I also do that sometimes. And कुछ characters obviously मेरे ऊपर भी half based होते हैं, या ऐसे भी होते हैं जो मैं नहीं हूँ but शायद मैं होना चाहती हूँ. In fact, this is very important. Story is one thing. So अभी किसी ने बोला, आपने शायद बोला कि हम क्यों लिखते हैं, to express ourselves, of course. But there is one another part. हमारे अंदर एक और हम है जो हम भी शायद अभी नहीं जानते. इतनी खोज के बाद भी, इतना सब कुछ जानने के बाद भी हम नहीं जानते हमारे उसको, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस है लाइफ में जिसमें हम अभी पढ़े ही नहीं है. मुझे पता ही नहीं है मैं क्या रिएक्ट, मुझे नहीं पता है कि कुछ वैसा हुआ तो मैं क्या रिएक्ट करूंगी.
मैं रास्ते में जा रही हूँ and I see somebody murdering somebody, I absolutely do not know what I will do. I might imagine something and I might actually do something else. So कई बार क्या होता है, आपको अपने आप को खोजने में ये stories बहुत help कर सकती है. A very good way to find yourself is write a story where the main character of the story is what you aspire to, but you're not being able to. वो शायद शॉर्ट स्कर्ट पहनती है, वो शायद बहुत रोमांटिक है और आप नहीं अभी अपने आप को उस तरीके से कर सकते हैं. हाँ, एग्जैक्टली. व्हाट इज इनसाइड यू, ट्राई दैट आउट. इनफैक्ट स्टोरीज में बहुत जरूरी है कि आप उन चीजों को ट्राई करें जो आपने सोचा है मैं तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती. And you will be surprised to find कि आपके कैरेक्टर्स जब वो करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा और तब समझ में आ जाएगा आप भी ये काम करना चाहती हैं. So that's it. So I'll show you how I have done this in my stories. So this is that Patha. So my book is there, Casket and Rescue. There are two characters, a boy and a girl. So I have just written in short that how I have done the characterization. So say there's Sanyukta. She's tall, 5 feet 4 inches, slim, well-built, dusky, chiseled features. Now these all हम बताएंगे, मैं आपको बाद में बताऊंगी अभी कि कैसे use करना है. Like that of an antique bronze statue. She sports fringes, her dreamy eyes. This is all normal physical features. Shoulder length, slightly curly hair, long eyelashes. Then I'm coming slowly to the mannerism. She's tomboyish in manner and straightforward. She's ambitious. She has goals and dreams. She's positive that she can achieve them. She's fiercely independent and full of self-respect. Her self-respect shines through her words, gestures, and the way she presents herself. She's physically and mentally strong, modern in outlook. Again, I've repeated, a little tomboyish, unpretentious. She doesn't try to hide her imperfections and is honest about it. She's passionate about archery, which is her first love. Identity and freedom are important to her. ये सारे आपको बहुत पॉजिटिव लग सकते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है. कई बार ये जो फियर्सनेस है उसकी फ्रीडम के प्रति, ये उसके लिए वो नेगेटिव भी स्टोरी में वर्क कर सकती है. Then there is Uttam, who's fair, handsome, has drooping blue eyes, broad shoulder, chestnut hair, and then athletic body. So because he's also in archery, he's friendly and does not have an air about himself. He's born in a zamindar family. He exudes a royal grace. He's not pampered, but he's a decent boy in all respect, easygoing and chivalrous. He treats women with politeness. He's romantic, the gift of gab, loving and caring, but respects old values. So this is where their conflict will be. Family oriented, especially his mother comes before everything. However, he's humble and modest. He's loyal to the core and respects other people's decisions. So this is how, he understands Sanyukta and all that. I'm just giving an example. Try to write at least apne 2 or 3 main characters ka characterization. So as a workshop, what we will do is that I'll ask you later, we'll give some time for that. I'll ask you to write any 3 characters you think of. Can be 3 girls, 3 boys, 1 man, 2 women, whoever you want. Anything you want to be, 3 characters with 3 names, and try to write a little bit about it. Okay, this is going to be a workshop work. Later, I will show this again so that you will know that will be a guideline for you. Now, world building. This is very important. World building need not be कि Harry Potter है तो ही world building की जरूरत है. World building is choosing a place. So I am really fond of choosing a place because every time when you are writing, if you can choose a different place, like in some one story I had Darjeeling as my background, one Chandan Nagar as a background, it helps a lot because every place has its own flavor. And right, so world building से क्या मजा बहुत आता है, जो पढ़ता है उसको मजा आता है. Exactly, culture, उसके accents, उसके वहाँ की जो बातें हैं वो मजा आता है और एक पर्सन की इंडिविजुअलिटी भी उसमें आ जाती है. So choose a place, choose certain things from there that we show the settings. एक शॉर्ट स्टोरी में आप सारी बातें नहीं लिख सकते, उस पर्टिकुलर जगह की. This also will be your part of a workshop when you will choose a place and you just write 3 or 4 things about that place. Suppose you have chosen Kolkata, so you make sure that I'm going to put somewhere Howrah Bridge, somewhere I'll put Rashogolla, somewhere I'll put yellow taxi, and anything.
just 3 or 4, you know, because just to add color, these are the colors that you need to add, and then use 5 senses. So this is also interesting, like क्या स्मेल है जो कोलकाता में बहुत अच्छे से आती है, हम क्या देखते हैं, क्या फील करते हैं, गर्मी फील करते हैं, ह्यूमिड फील करते हैं, right? All these 5 senses we should add to it. Now your first draft, after this you have to just start writing the story. I'm not explaining how you will write the story because I don't think you can actually do that. You know, everybody has their own way of writing a story. You know your characters, you know your setting, and you know what to say. Then you have to just write the story properly. I'm not coming to the point where there should be a beginning, there should be a middle, and there should be end. I think we all know that. That's for, like we tell the kids, of course it should be like that. But then many things will happen while we edit also. Because शुरू में ना ये नहीं सोचना है कि मुझे कहानी कैसे स्ट्रक्चरिंग करनी है, फिर आप डर के मारे लिख ही नहीं पाओ. हम लोग के भी हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं. As an author also, if I start thinking कि मैं जो लिख रही हूँ वो किसी को समझ में भी आएगा कि नहीं, कोई पढ़ेगा, ये सोचना ही नहीं, सिर्फ लिखना है. And I still do this. Many a times मैं सोचने लग जाती हूँ कि क्या लिख रही हूँ, ये कुछ, फिर मैं I tell myself, Neeta, you just write whatever you are wanting to write. बाद में देखेंगे. That is where this editing will come. तो पहले with all these things in your hand, you just write the story till the end and make your first confidently. कि जो लिखा है हम सुधार लेंगे, सुधारने का वक्त आएगा, right? So ये अब आएगा सुधारने का वक्त, where you're doing the checklist. So first thing which you do, this is very important because editing actually is now what you are making your story worthwhile कि लोग उसको पढ़ के enjoy कर सके. अब तक आपने जो किया वो है आपने enjoy किया लिखा. अब करना ये है कि जब लोग उसको पढ़े तो वो enjoy. So that is very important. So read aloud to check if it is sounding all right. This might feel like थोड़ी ना इसमें क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है. अपनी ही sentences को in whichever language you have written, read it loud, एकदम समझ में आएगा कि ये अटक रही है, ये आएगा समझ में. आप read जब जोर जोर से पढ़ोगे तो. There is a thing in MS Word also. एक MS Word में भी ये है option जहां आप क्लिक करेंगे तो वो रीड करता है. अगर आपको खुद नहीं पढ़ना है तो वो पढ़ के सुनो, तो भी आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा. और you can ask somebody to read it out for you and you will understand ये क्या है या ये सही है कि फॉर्मेशन सही नहीं हुआ कि क्या हुआ. Next is, are you showing rather than telling? Showing and telling बहुत common problem है जो होता है. हम जब कहानी लिखने बैठते हैं तो हमको बहुत कुछ बताना होता है, तो हम बताते जाते, that is telling. But you need to show also. If it is like a monologue, आप बताए जा रही है, यहाँ थी, उसने ये किया, तो story will become very, very boring. So now you'll have to show. Instead of saying that she was angry, if you show that her eyes were red and she was making a fist and she was just about to blood, so वो दिखेगा, वो दिखना चाहिए. You have to show it. Don't say that it was a cool winter morning. Say that there were, you know, maybe some snow were there or there was some oss tha, ki I had to pull the, you know, the quilt and do something. Yeah, exactly. Show it. That is very important. Then you have to see other sentences of the right length or not too confusing. Sometimes we tend to write a very long sentences adding add. My daughter does it. I said, how many and you are going to use it? This happened and then that and that. No. Please don't make lengthy sentences and too many and. One and is enough. Or agar and nahi ho, then it is best. Write short sentences. That's best. And because, you know, like many a times we think, because we read many authors writing very complicated lines and many a times we see many big authors doing so. तो हमारा ये कंसेप्शन हो जाता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखना ही अच्छा लिखना है. At least I am not a believer of this. As long as my authors should understand, my readers should understand what I'm trying to say, that is more important. If you can do that in an easy language and break your sentences so that, you know, it's easy and clear. Are some words repeated too many times? ये बहुत common mistake है. We tend to use beautiful, this, that, you know, बहुत ज़्यादा बोलते हैं. थोड़ा सा let's try to explain it and not write always the same words. Try to find out which words you have repeated. Check the uniformity of character names. ये कई बार sometimes we make the spelling mistakes. This is very important because editors जो होते हैं
वो बहुत चिढ़ जाते हैं कि आपने ये स्पेलिंग, हम लोगों को लगता है क्या है सुदीप तो SUDIOP किया कि ए किया, क्या फर्क पड़ता है ना, TA भी सुदीप्ता है सुदीप्ता, बट नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हेन वी गिव टू द एडिटर्स ऑल द स्पेलिंग्स, नेम स्पेलिंग शुड बी करेक्ट. चेक द क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स. ये हमारे साथ कभी कभी हो सकता है कि हमने पहले कुछ बोल दिया कि that boy was 10 years old and later we forget, और हमने 11 years कर दिया उसको, या किसी तरीके से कुछ कर दिया. नॉवेल में बड़ा, शॉर्ट स्टोरीज में कम होगा. एग्जैक्टली, या आई नो, आई एग्री, बट स्टिल हम एक बार सोच सकते हैं कि किसके बाद क्या इवेंट जा रहा है. ग्रामर ऑफ कोर्स वी हैव टू चेक. Either we check it and we are not confident we can get a person to check it who's good in grammar. We also have app Grammarly, yeah, that's good enough, but still, and obviously punctuation so goes without saying, wo to last mein hum log dekh hi sakte hain. So that's an editing checklist, and then comes the publisher wala part. So how to publish it. So normally publisher ko dene ke liye ek synopsis. Okay, so for short story what you can do is that short stories first में मैंने जो किया था, I had given it for a lot of magazines like Women's Era, Alive, these magazines. There are others also. मेरे टाइम पे एक और था Reading Hour करके, which is not there anymore. So short stories के लिए better है कि you start from there, क्योंकि book के लिए आपको तो at least काफी सारी short stories होनी चाहिए. And what I did with graphic novel is that I turned into a graphic novel, so I was using 3. Write a chapter outline, chapter wise. This is how the editors normally want. They want a synopsis and chapter. You know what is a synopsis? It's just a brief summary. It gives the idea, but it should not be too big. Half a page is fair enough. Don't go overboard. Publisher को इतना time नहीं होता, उस half a page में उसको समझना होता है कि जमेगा कि नहीं. And then the chapter outline छोटा सा करके फट करके. Short stories में भी अगर थोड़ी बड़ी short stories हो तो हम chapters कर लेते हैं. Query letter, and where you basically write that why do you think your story is good enough to be published, क्यों वो publish करे, ये आपको बताना है. Finding publisher of your genre is very important, क्योंकि किसी भी random आप बोलेंगे मुझे तो अभी पेंगुइन को देना है, इसको देना है, या और किसी को देना है, तो rejections आएंगी, कोई फायदा नहीं है. आप पहले देखिए कि short story है या memoir है, कि क्या लिख रहे हो आप, उसके हिसाब से. या साइंस फिक्शन लिखा, शॉर्ट स्टोरी में भी तो आप साइंस फिक्शन लिख सकते हो, हॉरर लिख सकते हो. वो दैट पर्टिकुलर पब्लिशर इज गुड इन प्रिंटिंग दोस, देन ही विल बी इंटरेस्टेड. सो ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट द पब्लिशर इज हैव पब्लिश्ड इन द पास्ट, एंड देन यू कैन सेंड द स्टोरी. रिजेक्शंस आर देयर, आई डोंट नो, आई हैव ओके. सो रिजेक्शंस के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि रिजेक्शंस आएंगे और होंगे, और इसमें कोई नथिंग न्यू अबाउट इट. Starting from J.K. Rowling to Amish to Jeffrey Archer, you name it. Abhi, we know them to be stalwarts, but everybody goes through a rejection. In fact, the fun part is, in a business, I think they say that that break-even comes in 3 years, but in writing it doesn't. I am a living proof. But I'm not telling about me only. I have, because, you know, when I used to get depressed, for you. I don't consider myself even now to be a, you know, bestseller. I'm just climbing my stairs. Of course, I have learned much, but कोई bestseller भी है तो 10-11 years भी लग जाते हैं. You know, when I used to get depressed कि यार कुछ नहीं हो रहा है, क्या है? So what I used to do is that I used to open all the Wikipedia of all the top authors. And वहां लिखे होते थे उस पर्सन ने 26 साल में शुरू की, उसको 50 साल में रिकॉग्निशन मिला, है. ओह माय गॉड, अभी काल मैंने कभी 10 साल भी नहीं हुए हार्डली शुरू किए, तो मैं कर सकती. Sorry to interrupt, but share a fact. Amish Tripathi की जो Short Trilogy की first book थी, he spent ₹1 crore to publish and market it. Yeah. And that also after self-published. It was self-published. Even Chetan Bhagat's first book was self-published. They spent the money to market themselves, और उस marketing का जो खर्चा किया, that is what they reap the benefits for. Exactly. Yeah, she's coming to her brand and thing. So we can. Yes, exactly. So those two people were like that. So they got a little urge because they're from the marketing background. But normally for an author, that's very popular. She was rejected, and there is a movie also on her where you can see that she was in a very problematic situation.
So don't lose heart, keep writing. And yes, I wanted to add that don't write for anybody, write for yourself. Don't write to please anyone, because there is two things to it. आप बोलोगे कि मैंने लिखा है, कोई पढ़ेगा नहीं तो क्या फायदा? But don't worry. There are many types of readers. There are many types of writings. The type of writing you are giving, उसका कहीं ना कहीं तो कोई reader है. हाँ, पहुंचने में हो सकता है वक्त लग जाए. जैसे कुछ there are certain genres which are very very fast speaking. If you write a chick lit, if you write a love story, romantic story, if you write a thriller, वो बहुत जल्दी hot cake की तरह बिकती है, ये fact. But आप अगर नहीं लिखने में enjoy कर रहे हो तो आप नहीं लिख सकते. आप चाहे कितना भी मगजमारी करो, आप डिप्रेस्ड होके निकल आओगे. So don't go get into that. Write whatever you feel good about. See, it's as we all know, it's about the journey. लिखते वक्त अच्छा लगना चाहिए. And to start with, अगर अभी भी लग रहा है मैं short story लिखूं, क्या लिखूं, just start writing journals every day. एक कॉपी बनाइए, डायरी बनाइए. अगर लिखने की तमन्ना है मन में कि कभी लिखना है, तो बस एक डायरी बनाइए और रोज शाम को you just jot down whatever you want to write. It might be whatever you did entire day. It might be what you felt good about in the entire day. It might be all the complaints, whatever. You just write. Don't think that time कि क्या होगा, नहीं होगा, कौन पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा, कोई बात नहीं. Because you are writing it for yourself. Keep writing. Also, if you are thinking of writing as a professional writer, and if you start writing, try to fix a time and place. This is something which I believe strongly. I have a fixed time and I have a fixed place where I write. And amazingly, उस जगह की creativity बढ़ जाती है कुछ दिन के. आप वापस वहां जाते ही ऐसे लगता है कि बत्ती जल गई. ये है. ये पहले मैंने बहुत सारे बड़े ऑथर्स को बोलते सुना था, और जब तक मैंने ये किया नहीं था तब तक मुझे लगा था हाँ ठीक है, वो तो अब बहुत बड़े ऑथर हो गए, कुछ भी बोल सकते. ऐसा नहीं. When I did it, I realized it does happen. What I write in another place in 2 hours, I write there in half an hour. वो उस जगह का ऑरा वैसा होगा. एकदम ऑरा वैसा हो जाता है. ये कैफे ऑफिस बेस्ट रहेगा. Actually, correct. So all of you can start doing just any 3 characters you write with these characterizations and place. You can start. And So online में अगर किसी को कुछ पूछना है, हाँ, so they can also ask now. And after you have written, I'll ask some of them to read out also randomly. I might ask some of them to read out. so online में किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं नीता से. So it has to be a person or it can be a place. It can be. No, characters तो at least it has to be. I mean, it can be a non-person also. Yeah, exactly. I mean, yeah, exactly. अभी तो बहुत common है. Anything. Whoever wants your character to be. If you want your character to be this door also, it works fine. As long as the door can also speak. We can go for personification. door की आत्मकथा लिख सकते हैं. And in the meantime, yes, if anybody wants to ask me anything, I didn't recognize him. Rakhi. मतलब सारे गाने This is awesome. Super awesome. Awesome is a. मेरा क्वेश्चन है, जैसे अभी आपने बोला कि आप अपने बारे में ही लिखिए बस. तो जैसे मैं अपने बारे में लिख रही हूँ, तो मेरा कैरेक्टर, मैं बचपन का कैरेक्टर लिख सकती हूँ. एकदम मेमोयर हो जाएगा फिर तो बहुत बढ़िया से. नहीं है, रोज रिवीजन होता है. और जो आप बनना चाहते थे और आप नहीं बन पाए, वो भी लिख सकते हैं. बना लीजिए, काश में फ्रेंड बना लीजिए. लेकिन एक मेरा क्वेश्चन है कि जब आप ऐसे कुछ आसपास के लोगों से कैरेक्टर हम उठाते हैं, मोस्टली कोई फनी इंसिडेंट समझ में आता किसी को. नहीं, वो नहीं आता उतना नहीं समझ. वो क्योंकि हमने देखा है. हाँ, इतनी सफाई से लिखना पड़ता है. हाँ, वो सफाई से मिक्स करते हैं ना इधर उधर की चीजें भी. और वो कभी आपको तुम्हारे नजरिए से थोड़ी देख रहा है. वो खुद को तुम्हारे नजरिए से थोड़ी देख रहा है. प्लस कई बार ये पॉजिटिव हो सकती है, अगर समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है ना. मैंने आपको लिखा. हाँ, मतलब कोई घटना होती है, कोई चीजें होती है तो हम उठाते कुछ ऑथर्स आप बिलीव नहीं करोगे, ऑथर्स हम लोग तो बहुत देखभाल के डर के लिखते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक. बट कुछ ऑथर इतने लीथल होते हैं, वो तो रूथलेस होते हैं, वो तो उठा के सारे कैरेक्टर्स लिख डालते हैं. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी क्या मुकाम पे पहुंचने के बाद फर्क नहीं पड़ता है. मैं वेट करी उसी मुकाम तक. बहुत लोगों का बहुत कुछ लिखना है, खुल के लिखना है. देखो लिख डालो, सब ऊपर पहुंच गए. नहीं, वो तो मैं कर ही रही हूँ. तो बीच में तो मेरे चला ही जाता है.
So Neeta, from where did you get the inspiration to do this? To write? Pesky and Pesky and this. So Pesky, I went to Darjeeling and I was at Glenburn. वहाँ क्या है टूर दिया था मुझे एक लड़की की, तो वो मैं तो फिर बहुत बात की उससे. Apart from the tour, I wanted to ask her what is this, that. So probably from there the inspiration came because I heard about her hard life and all other people what they go through. She said, I am not married, but most of the girls get married because they have to, and there are many other things. So that is how I got the inspiration. Casket के लिए inspiration था कि archery मैंने अचानक से चूज की, in the sense कि जैसे मैंने बोला ना सेटिंग बहुत जरूरी है, तो मुझे लगा कोई ऐसा स्पोर्ट्स उठाती हूँ जो नहीं जनरली टच किया है किसी ने. बट यस, आई वांटेड टू शो कि आइडेंटिटी के लिए लोग कहाँ तक जा सकते. दैट वाज द थिंग. सो फ्रॉम देयर आई गॉट. You were always interested in writing? Yes, I was always interested in writing. No. Since my childhood, I used to write. I used to just write and not show to anybody. I had seen my mother write poetry. She, in Hindi only, she had this, she still has this maroon color diary where she used to write her poetries. And when I used to read a lot. So whenever I used to read, I used to think, बहुत अच्छा लगा अगर कुछ पढ़ के लिखता था, ऐसा मुझे एक दिन लिखना है, ये मुझे लिखना है. लेकिन तब मैं लिखती नहीं थी और लिखती भी थी तो दिखाती नहीं थी. बट मैंने अपने आप को एक वादा किया था कि मरने के पहले एक बुक तो मेरी लिखनी है. मुझे ये मेरे लिए ही वादा था. और मैं सबको बोलती थी, अपने टीचर्स जो, मेरे अंदर ना ये ज़ील अगर आपको कभी लगा कि जा रहा है ना तो जगा दे. टचवुड ऐसी नौबत आई नहीं, मेरी ज़ील गई नहीं. एंड व्हेन आई वाज लाइक लाइक 38 ऐसे जा रही थी 40 की तरफ. हम लोग नॉर्मली सोचे ना, नॉर्मल लाइफ तो 100 साल तो कोई जीता नहीं है, 80 साल तो जी सकते. मैंने सोचा मेरी आधी जिंदगी में ही लग गई और मैं वो नहीं कर रही हूँ जो मुझे करना है. And then suddenly, like, I want to leave office, I want to write, I started. Then I started. Somebody is asking if someone wants to write, इसको stop share करूँ क्या कि नहीं ये चाहिएगा, उनको दिखे ना भी चाहिए ना. Okay, we can just open the chat now. So if we want to write a bhajan, how to do? So I think in a bhajan, what is important is the rhythm, the rhymings, basically the rhymings. So you can just just write first what you want to say, and then try to make short sentences one after another, and try to see if you can rhyme. I think better Manisha can tell better about this because she writes poem like anything. 2 minutes में poem लिख सकती है. बात करते करते भजन कैसे लिखें? भजन लिखने के लिए तो आपको आस्था होनी चाहिए सबसे पहले. नहीं, मुझे ऐसा लगता है रितु जी कि भजन लिखने के लिए आपको पहले एक धुन को शुरुआती दिनों में किसी फिल्मी गाने की किसी धुन को पकड़ के उस पे शब्दों के वर्क करना चाहिए. फिर धीरे धीरे आपके अंदर फ्लो के भी आने लग जाएंगे, तो उसके बाद फिर आप कर सकते. I think you got your answer, Ritu ji. तो जब तक सब लिख देना बैठो. दो कर लो, एक कर लो, कुछ भी कर लो. 3 कैरेक्टर सोचना ही अलग-अलग. 7 लाइन स्टोरी क्यों नहीं हो सकता है? शॉर्ट फिक्शन बहुत होता है. अभी तो कैरेक्टर शब्दों में कविता हो जाती है. नहीं बोला है, कैरेक्टर लिखने के लिए कैरेक्टर्स बोला है. 2 कैरेक्टर के बारे में anyone, any person, any character is a character. I hope the AC is comfortable now. Yes. Thank you so much. File is Write 2 characters, I think. No cheating. Yes. No cheating. You will have to read it. You will read it. I'll ask you to read it. Let them finish. Because otherwise they'll get distracted. Very good. Very good. That is important. अच्छे से करना important.
because mother Split person. daughter, mother ठीक है and ठीक है, wife. अलग होना चाहिए कुछ हाँ, कुछ अलग हो. कुछ अलग होना चाहिए तीनों में. मदर बन के क्या चेंज हो गया, डॉक्टर से क्या चेंज हो गया, कुछ तो चेंजेस हो जाएंगे. See, writing is a creative word and there is nothing called ये सही नहीं है. राइटिंग में कुछ ऐसा नहीं, सब सही है. वो ग्रामर एंड पंक्चुएशन टेंस में मैं नहीं आ रही थी. Of course, absolutely. I think she's writing in Hindi. हाँ, मेरे को इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं, राइटिंग तो राइटिंग है. ओके, इसके पास ना स्क्रीन के रश्मि कैरेक्टर को डिस्क्राइब करते तो स्टोरी आने लग रहा है. गुड ना, बिकॉज आई थिंक वी आर प्लानिंग फॉर कि इसी पे आप स्टोरीज लिख के यू विल सेंड. है ना, सेंड. ठीक है, वेरी वेल एक्सप्लेन. ओह, थैंक यू. ऑनलाइन वालों से पूछना किसने लिखा है तो उनका सुन लेते हैं. हाँ, इतना जल्दी तो कोई शायद ही लिखा हाँ, होगा. हाँ, बात अपने घर की शांति में बैठ के वो लोग कर रहे हैं. घर में शांति, बहुत यहाँ शांति, घर शांति में रहेगी इसको. घर में शांति यहाँ का और हाँ है ना. Hi, हाय. I missed for some reason. I've written something. Okay. Should we start? Characterization. You have done characterization. Yes, it's like a poetry I've written of one character, as in. You can see it there. Okay. Should I share? Yes. Yes, you can say that. Uh, Yes, of course, please. just a second. Yes. एक बार इसको स्टॉप शेयर करो. आई थिंक एवरीबody must have noted down the ठीक है, things. ठीक है. And see them जितना big आता है उतना easily Yes, yes, ऐसे yes. ऐसे वर्क नहीं कर सकते. हाँ, इसमें आप थोड़ी concentration भी चाहिए. हाँ. Please let me know when to start. Start now. 1 second ना वो अच्छा. Uh-huh. Yes. बहुत करिए. इनका ये तो क्लास वर्क है, बहुत अलग है. फाइल लिख चुकी हो क्या? यहाँ पे और उसको ठंडी लग रहा है. कहाँ से ठंडा लग रहा है? सीरियसली यहाँ चर्बी का जरूरत है, ले ली. यहाँ पे नहीं लग रहा है. गरम कुछ भी तुम बाहर अगर गरम एकदम ठंडा है ही नहीं. हमें तो जैकेट में बट अंदर तो कुछ नहीं है. तो बेचारे बिना सहारे. नहीं वो नहीं, बट it's not a
Thought of specialization lab, that's right about it. I had this is my topic for no, all is okay. Yeah, so access. Yes. Yes, maybe we can hear. So let's listen to what. I tried to rhyme a bit. So it goes something like this. Oh dear, you popped out finally. You occurred out of mistake. And the pain you gave me throughout my journey of Siliguri will not be blurry. You dark color creepy creature left a scar on my tummy forever. The moment you dried out, I want to dance and shout out. I am all free now from all the pains. Again enjoy like lovebirds in the rains. Advice to all the cafeites, don't use steam iron while wearing an outfit tight. So I tried to create a suspense and then... Yeah, exactly. It's like a suspense story. And then bas itna hi kiya. Very good. So anybody would like to read out? Yeah. Yes, you wanted to. Yeah, please. रजनी, पापा की लाडली, नाम दिया टुनटुन। क्यों? जब भी पूछती तो कहते थे जब तुमसे मिला तो तुम मुझे तुम्हारे गले से एक टन की आवाज आ रही थी तो मैंने टुनटुन ही क्यों? टुनटुन ही क्यों? कहते थे कि टुनटुन मोटी बहुत अच्छा गाती थी, फिर कॉमेडियन बन गई तो ऐसे हुआ नाम पर। वेरी गुड, वेरी नाइस। सेकंड कैरेक्टर। जब शादी हुई बहू बनी हो गई पराई, जब पापा से ने कहा अब कुछ चाहिए तो अपने उस पापा से मांगना, मेरे पास नहीं आना। सुबह जल्दी उठने लगी, सबको खिलाने लगी, सीख गई, लड़ना झगड़ना छूट गया, भूल गई सब चीज आगे से ही मिल जाती थी, रोज रात को चॉकलेट भी। So when you write a story on this, अच्छा लगा मुझे, ये बहुत सुंदर। तो आप जब मेमोयर की तरह ही लिखे तो पहले बाद में जो आपने बहुत सारी चीजें बताई है ना, उसके अगेंस्ट पहले में एक फर्क बताई। जब वो बच्ची थी आपने सिर्फ नाम के बारे में बताया ना, अभी इसमें बहुत सारी चीजें सेकंड वाले में कि वो सबको खिलाने लगी। तो इसका मतलब आपको पहले बताना है कि जब वो छोटी थी तो वो खिलाती नहीं थी, तो वो खाने में लगी रहती थी, जब वो खाने में लगी रहती थी, खाना पसंद, वो कॉन्ट्रास्ट डेवलप करना होगा। यू अंडरस्टैंड? जो खाती थी वो खिलाने लगी। हाँ, आप खिलाने लगी तब मजा आएगा सुनने में, जब ये पता चले कि पहले वो खाती थी, खिलाने से कोई मतलब नहीं था, अब वो अपना खाना भूल गई है, अब वो खिलाने में लग गई। तो वो कॉन्ट्रास्ट जैसे जैसे आप करेंगी वो स्टोरी में बराबर। जैसे कि भाई रोज खाने के पहले मैं इतने नखरे दिखाती थी, मेरी मम्मी को 3-4 आइटम बनाने पड़ते थे मेरे लिए, और अभी चुपचाप जो देते हो सब जो मेरे को मेरी सास देती थी मैं खा लेती। तो रुसना लड़ना भूल। हाँ, तो वो एग्जैक्टली वो सारा चीज का कंपेरिजन आपने लिखा है। हम लड़ाई वगैरह नहीं करते हैं नहीं, इसमें सेकंड वाले में बंद गई ना, तो पहले क्या लड़ती थी वो बताना। हाँ, वही लड़ाई किया होगा ना छोटे में, तो बताना होगा। और सोचने बैठोगे ना तो ऐसी ऐसी बातें याद आएगी जो आपको पता है ध्यान ही नहीं था, मजा आएगा। और कोई तो क्या था लिखना, लेकिन पता नहीं क्या, कोई बात नहीं। पसीने से लथपथ भागती हुई अपनी रबड़ की चप्पड़ को वो घसीटते हुए वो अपनी साड़ी के पल्लू से पसीने पहुंचते पहुंचते उस बिल्डिंग के अंदर घुसती है और सिक्योरिटी गार्ड को बोला 12th फ्लोर पे जाना है। वो यूपी का बंदा था और खैनी चबाते चबाते उसे सरसरी निगाहों से ऊपर से नीचे देखने लगा और उसकी वेशभूषा को देखकर बड़ी ही लापरवाही से पूछा, कहाँ जाना है, कहाँ जाइएगा, तो लिखना आता है आपको? तो उसने थोड़ा दबाव से कहा, टीचर हूँ। और गार्ड सकपका के फिर उसने उसे ऊपर से नीचे देखा, उसके उड़ते हुए बाल, उसके बिना मेकअप का चेहरा, किसी भी एंगल से टीचर तो नहीं लग रही।
फिर उसने कहा कहाँ जाइएगा, अपना नाम रजिस्टर में लिख कर जाइए। और दूसरे गार्ड को धीरे से बोला, मुंबई में ऐसे भी टीचर आया करती है, पहला दिन ही बच्चा लोग भगा दे। गुड, सो देयर आर टू और थिंग्स लिफ्ट में भाग रही हुई हाँ. वो सोच रही थी अपनी पहली ट्यूशन क्लास के बारे में कि आज वो क्या करेगी, और दिमाग में घर की रूपरेखा चल रही थी कि किस जद्दोजहद से वो आज अपने घर के बाहर पहला कदम निकाले। वेरी गुड, सो ये आपने पूरी स्टोरी लिख दी। सो वी कॉल्ड इट अ फ्लैश फिक्शन, इट्स अ फ्लैश फिक्शन व्हिच हैव ऑलरेडी रिटन, और ये अपने आप में स्टोरी है। और एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि आपने स्टीरियोटाइप तोड़ा। टीचर वैसी नहीं लग रही थी जैसे टीचर को लगना चाहिए। ये बहुत कॉमन है कि हम लोग स्टोरीज में पहले एक ट्रेंड था, ये है तो ये ऐसा ही लगना चाहिए, वो है तो वो ऐसा लगना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज है कि हम अपने स्टोरीज के थ्रू वो स्टीरियोटाइप को तोड़ दें। और जैसे आपने बोला कि वो बंदा यूपी का था तो वो लैंग्वेज यूपी की आ रही थी। वेरी वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। तो व्हाट वी कैन डू इज दैट, आपने जिन्होंने भी ये कैरेक्टराइजेशन किया है, आप बाद में आराम से एक सेटिंग ऐड कर दीजिए, और यू ऑल कैन राइट अ स्टोरी एंड सेंड इट टू मी ऑन माय ईमेल आईडी, व्हिच प्रोबेबली ग्रुप में ये डाल देंगे, एंड देन आई विल डेफिनेटली रीड ऑल ऑफ देम एंड ट्राई टू कमेंट ऑन। Nita, can we share your PPT in the group also? Yes, yes, Yes. So it's writing group में डाल देंगे. हाँ, ठीक है, definitely. Any questions? Yes. Yes, please. If the time permits, I don't know. Like, हाँ, yes. अभी हम लोग का वो खाने वाला ब्रेक टाइम है. Okay. Yes. चुलबुली सी वो लड़की लगती थी सबको बहुत प्यारी, डरती थी नहीं किसी से वो, फिर भी करती थी राज हर एक के दिल को। पापा की लाडली और दोस्तों की जान थी, पर दिल दे बैठी थी वो किसी नौजवान। जान घुसने वाला रौबदार नौजवान था वो, बोलता कम पर आंखों ही आंखों में सब कुछ कह देता था। उसका किसी और से बात करना अच्छा नहीं लगता था उसे, शायद इसीलिए उसे इतना प्यार करती। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। ये कैरेक्टराइजेशन एक कविता की तरह भी लग रहा था मुझे, ऐसा लग रहा था कविता। अच्छा, वही वो उसमें आ गया, वो स्टोरी के फ्लेवर आ गया, पोएटिक फ्लेवर आ गया। वंडरफुल। See, there is writer lurking inside everybody of us, each of us. Just have to start doing it. अच्छा, one thing I wanted to ask, when we are treating the story, तो कई बार तो जैसे अभी मैं शुरू की थी तो वो पसीना पहुंचने तक भी मुझे नहीं होता नेक्स्ट क्या मैं करने वाली हूँ। तो कई बार मैं ये सोचती हूँ कि हमें पहले अपनी स्टोरी को नॉर्मली ड्राफ्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद आप उसको चेंजेस होते हैं, हाँ, बहुत चेंजेस होते हैं, कैरेक्टर एडिशन करते जाओ, उसको कैरेक्टर भी चेंज होता है। नहीं, मेरे बहुत सारे स्टोरीज में मेरे कैरेक्टर ने एक तरीके से बिहेव किया है फर्स्ट ड्राफ्ट में, और बाद में उसका बिहेवियर, वो सिचुएशन सारे चेंज होते हैं, क्योंकि मुझे लगा नहीं ऐसे नहीं पहुंचते हो, वो लॉजिकल भी तो होना चाहिए। करेक्ट, क्योंकि हम लोग बहुत बार एडिटिंग के टाइम क्या होते हैं, हम फिर वो स्टोरी को पढ़ते, तब आपको लगेगा ये ऐसे नहीं, ऐसे कहीं आप एक्सपैंड भी कर दोगे, कहीं लगेगा ये भी ऐड कर दिए। हम चलते फिरते, मैं स्टोरीज को बहुत बार चेंज कर लेती हूँ, चलते फिरते लगता है ये चीज भी तो बोलनी थी, मुझे याद आ जाती है। तो व्हाट आई डू नॉर्मली इज, मेरे इसमें नोट्स या कोई नोटबुक में लिखते हैं। हाँ, आप लोगों को अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज बताइए, बोलना। हाँ, किसी को स्टोरी रीड आउट करनी है, कैरेक्टराइजेशन बेसिकली, स्टोरी तो नहीं, कैरेक्टराइजेशन रीड आउट करनी है किसी को। ऑनलाइन फ्रेंड्स, मैंने जो एक I'm already feeling hesitant to share it with you. No, please don't. Yeah, tell me. So since you said write some characters, so I tried to write 2, 3. Saurabh is a lean, athletic with dark brown hair. He is 20, enthusiastic but hesitant. He wants to go study in US and has applied in few colleges, but half the time biting nails. His focus and hard work is commendable, as I can see him reading, making notes, even in the wee hours of the morning. That's what. Wonderful. Your son. You would know. नहीं, मुझे इसका ये बताइए कि मुझे इसमें क्या करना चाहिए था। I mean, हाँ, इसमें अभी अच्छा तो बहुत है, और आपने वो नेल बाइटिंग वाली अच्छा मत बताइए, खराबियां बताइए। नहीं, खराबी कुछ भी नहीं है इसमें, और आप ऐड कर सकती हैं।
आपको और छोटी बातें ऐड करनी होगी और उसकी कुछ अच्छी आदतें कुछ बुरी आदतें दोनों को लिखना. I have to build up. Yeah. More you write about the character, more you know how the character will behave in certain situations जो आपके स्टोरी में आने वाला है. हाँ, वो आगे आएगा. हाँ, okay. हाँ, तो सिचुएशंस तो बाद में आएंगी, लेकिन आपको पहले पता होगा कि ये कैरेक्टर क्या बिहेव करता है, अगर आपने डिटेल में लिख लिया हो. ये तो चलिए आप शायद ये लोग कह रहे कि थोड़ा सा आपके बेटे के ऊपर है, मगर हम कई बार कैरेक्टराइजेशन एकदम अलग करते हैं. I don't know, इन लोगों ने मेरे बेटे को तो नहीं जा रहा है यूएस, मुझे उसको भेजना है. आप बोले थे नहीं, इमेजिन करो. हाँ, अच्छा है ना, आपने इमेजिन किया कि वो वहां जाना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप. एग्जैक्टली. But I'm very happy that my cafe friends feel that it's on my son. That's good. Thank you, Neeta. Thank you so much. Thank you. So people online, you can join us at 4 o'clock. Yeah, can I share mine? Yes, I have written something. So I have created a character who's 75. She's beautiful, tall, frail and clear skinned. She's simply clad in salwar suit. And she likes to wear a lot of gold with jhumkas and nose pin and gold chain and bangles. She's a talkative person who has a very active lifestyle, and she's very spiritual and ritualistic. She's socially active, she's popular, she's hardworking. So she's scared of doing the wrong. That is the value that she holds very close to herself. And her ethics are average, not very strong. And her life purpose, she has none, but she likes to follow her own self. You know, she does not believe in getting anyone to ask her to do things. She has her own strong character. And she lives at home with her family, and she's very basic intelligence because she's not very well read. At 75, she never got opportunity to read, and she holds a very high self-esteem. So this is how I created a character. Yes, that's quite a detailed characterization. Very good, very nice. Thank you. Try to write a story around it. All of you who have written something. I have written just 4 lines. Shall I read it out? Yes, please. Yes. एक लड़की सीधी साधी सी, लाल मैक्सी पहनकर बहुत इठलाती थी. आज भी वो तस्वीर है उसके आंखों के सामने, और वो उन दिनों की बात याद करती है. It's not rhyming, but I've just rhyme. आपको इसमें स्टोरी लिखनी है बबीता. मुझे इसमें टाइटल मिल गया स्टोरी का, लाल मैक्सी वाली लड़की. I've written just this much. Very nice, very nice. Excuse me. Yes, Kavita. Nahi, who is that? Kavita. Yes, Kavita. I have written something in chat. Please reply. Okay, written something on chat. If you want to write non-fiction, like write up based on present scenario, like child psychologically, basic and educational and all. Yes, you can do that also. Non-fiction you can write, and then try to, as I said, in between only there should be a beginning, a middle and end. So when you are writing a non-fiction, it is little different from writing a story. In non-fiction, there has to be a beginning where you just write what are you going to write about. Then in the middle, you just write in elaborate what you want to write. And at the end, you have to culminate कि ये इससे मुझे ये समझ में आया. You know, आपने खोला, फिर आपने डिटेल किया, और लास्ट में आपने उस बात को अपनी खत्म करी. So you can do that. And non-fiction लिखेंगे तो आपको पहले points लिख लेना चाहिए. Bullet points में क्या बोलना चाह रही हैं. हर bullet points के सामने आप लिखिए कि आपने उस point को लेके क्या डिटेल करना है, और फिर सुंदर से उसको सजाने की जरूरत है. I hope I've answered your question. Yes. Thank you so much. Thank you. Abhilasha wants to share. Yeah. I've written this character. Her name is Varnika. She's a woman of 27. Fair, short-heighted,
delicate looks, open-minded thoughts, non-judgmental, always eager to help. She is rudely straightforward, and she's frustrated on not being taken seriously because of her delicate looks. Okay. That's all I could do. Wonderful. Nicely done. Wonderful. Small like that. Yes. It was my 40th birthday. My best friend Kajal, presently in Bangalore, was the first caller in the midnight always. I was just waiting, she will call. Before 5 minutes, I started looking at my phone again and again. Now on this day, she called, the phone rang, and I just pick it up. She started touching, oh, the astrologer. I said, why you're saying like this? Literally, no. Then I will also say you like a beauty queen or beauty pageant, because at the age of 40, we both have achieved something different in our life. We all studied like a CS, and she was a software engineer, and we both have launched to a different destinations ahead. She has become a beauty pageant by just getting Mrs. India title, and I have just changed my life process by being an astrologer and a consultant. Wonderful. Wonderful. Very nice. I'll say, Yeah. this person's name is Hardik. He is 35, very good looking, but of late he has become obese because he has lost interest in his life. He has a very shabby character, but he is very attractive. He finds it difficult to commit because he had been heartbroken in the past, but he is very filmy and romantic. He has very self-perception is very high, but he has to lower down his standards because of his struggle in his monetary aspects. So he has to compromise into many situations like that. He is homely and religious. He has limited friends, but he has strong belief in himself. Great. Very good. So we can see a story lurking in there about a person who is kind of little depressed, but he is trying to come out of but his own he is depression. very moral Yeah. strong. I will be. हाँ, exactly. So आपके पास ये पूरी स्टोरी है इस कैरेक्टर से कि वो कैसे उस चीज से निकलता है और अपने आप को वो वापस से एस्टैब्लिश करता है. I like to say even Sure. I think Wow. start with enthusiasm. I know. Start with the refreshments along. Yeah, exactly. Along that. Next. So that we don't miss you. We come back at 4:15, huh? 4:15, huh? That's okay. Let's come back at 4:15, huh? 4:15 पर आप लोग वापस से join करो, ठीक है? All right.